Salam guys, hope you're well. Today I've got this beautiful hairstyle for you. आज मैं आपको सिखाऊंगी ये हेयर स्टाइल मैंने कैसे किया है। फ्रंट के बाल मैंने थोड़े से सेपरेट कर दिए एंड पीछे से स्प्लिट करके दो हाफ्स में एंड देन इसको मैं क्लीनली इसको एक पोनीटेल में बना दूंगी. So I've separated off the sections of the front hair that I wanted out, then I've split the back into two and I'm just putting that into a high ponytail and I'm just smoothing it out with a wax stick and a bit of hairspray, and then I'm going to tie the bobble around it, but the last time you go around the bobble you want it into a loop, so keep an eye on the video and see what I do. So यहाँ पे मैंने स्मूथ कर दिया है, एक हाई पोनीटेल कर दूंगी एंड देन जो आखिरी टाइम आपने इसको करना है पोनीटेल को, आप देखें कि मैं क्या करूँ, मैं पूरा फुल थ्रू नहीं करी और इसको मैं छोड़ देती हूँ. ये बहुत ही ईजी हेयर स्टाइल है. So on the other side I do the same thing. So I've left it in a loop for a reason, and this is a really easy way of creating this hairstyle, so I wanted to show you guys how I've done this because I've done it a few times now. It just works out really easy. आपने इसको स्मूथ कर देना है, नीट एंड क्लीन कर दें एंड देन दूसरी साइड को भी आपने ऊपर ब्रश करके एंड इसको पोनीटेल में कर देना है. Keep an eye on how I'm using my bobble. You're not going to see the bobbles afterwards, so it doesn't matter what you use here. So 2-3 times, third time I loop it. Then आपने इन दोनों पीसेस को आपने इनको join कर देना है. So आप एक दूसरे से अंदर निकाल के जाएंगे. So you can see I'm opening up the hole and I'm pulling one pony through the other, and then I'm going to hold this down and pin it, and that literally creates your bun for you. This seriously is so quick to do. आपने देखा है कि मैंने पुल थ्रू कर दिया एक दूसरे से पोनीटेल को एंड देन उसको पकड़ के मैं बस वहाँ पे एक दो पिन डाल दूँगी एंड देन इसकी जो शेप है वो लेके आऊँगी. So to create the shape you can create it as big as you want, as small as you want. I smoothed it down and then I'm using a little bit of texturizing powder. I spray that all over and then I start pulling, and then now it's up to you how big you want this or how small. So थोड़ा सा टेक्सचराइजिंग पाउडर लगा के तो इसको ऐसे फिंगर्स से ही इसकी शेप लेके आ रही हूँ जैसे आपका दिल करता है, एंड इसको आप जितना बड़ा या छोटा भी बना सकते हो. The ends weren't really long enough. I did like them sticking out, and you can bring them to the front or back however you want to. However, I took them to the back and just pinned them so that it looked neat. जो एंड्स होते हैं अगर लंबे बाल हों आप उसको थोड़ा सा कर्ल्स करके तो बाहर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके काफ़ी छोटे थे तो इसको मैंने पीछे से बस पिन कर दिया, नीट हो गया. From the front I just use a little bit of hairspray and I curl the front. I took out quite a bit of hair because I wasn't quite sure if I wanted a lot or not. So what I'm doing is I sectioned this off and I curled it in two sections, and I'm curling away from the face, and then I decide whether this is too much or not, which I did think it was a bit too much afterwards, but it's completely up to you and your client whether you want that much hair out or not. I did end up splitting it up and taking a little bit back eventually. So अपने सेक्शंस करके अपने कर्ल्स कर दे. काफ़ी ज़्यादा बाल मैंने छोड़े हुए थे, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके ज़्यादा बाल हो या कम हो. सो 2 सेक्शंस में मैंने इसको कर्ल कर दिया, बैकवर्ड्स की तरफ कर्ल लेके गई हूँ एंड देन इसको थोड़ा सा सीरम लगा दूँगी कि थोड़े से स्मूथ एंड नीट कर्ल्स लगे. एंड देन थोड़े से मैंने जो हाफ सेक्शन है वो पीछे की तरफ ले गई थी बाद में क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बाल लग रहे थे. So take your time. I'm just using a 1-inch curler here. Mine are GHDs if you're interested to know. And then what I do is I just from the front, I kind of like just manipulate the hair a little bit. So I add a little bit of the texturizing powder. This gives me a little bit of hold in the hair at the front. So I haven't used any hairspray yet. And then you can kind of like manipulate the hair a little bit and you'll see I use my hands to kind of like bring this forward. So यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचराइजिंग पाउडर ऐड कर दिया, हेयर स्प्रे नहीं यूज़ करी अभी तक. और फिर यहाँ पे मैं थोड़े से बालों को अपने हाथों के साथ ही थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी, कर्ल वापस ले आऊँगी एंड आप देखेंगे कि फ्रंट से ना थोड़ा सा मैं इसको दिल कर रहा था कि फॉरवर्ड आए जैसे सेंटर पार्टिंग, लेकिन इसको ऐसे करके ना तो मैं आगे की तरफ ले आई हूँ. So you can see I'm manipulating the hair, bringing it into position. I wanted it quite forward and sweeping the forehead a little bit. So I've just used my texturizing powder here, and then I will add some hairspray later on. So it's however you feel that it frames the face. At this point I was deciding whether I wanted to take a little bit of the hair back or not, which I did. So I split it up and I took this section back and pinned it to the back. So इस साइड पे मैं देख रही थी कि ज़्यादा बाल हैं या नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया था कि थोड़े से बाल इसके पीछे ले जाती हूँ, मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, जस्ट इनफ कर्ल था. एंड देन बाकी के बाल मैं पीछे की तरफ ले गई एंड पिनिंग कर दी, इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर दिया एंड ये आपका हेयर स्टाइल फिनिश्ड हो गया. ये काफ़ी जल्दी ट्यूटोरियल मैंने किया है, लेकिन एक्चुअली असल में भी ये जो हेयर स्टाइल है ना काफ़ी जल्दी हो जाता है.
So this was a very quick tutorial just to show you how I created this hairstyle. If you ever want to create this, you can do this on yourself as well. It's such an easy hairstyle to do. The video is a little bit longer, but when you do this on yourself, or if you do it on someone else, it is actually really quick to do, and it is just a very nice hairstyle to do, and it's a very hairstyle that at the moment a lot of people are doing, and it's a very, you know, Instagram and TikTok hairstyle as well. A lot of people are doing this kind of hairstyle, so I thought I'd just show you how this was. Please do like, share and subscribe. I know I have different kinds of videos on my channel now, but there are playlists for your Urdu makeup and your English makeup and your hairstyles and things like that, and my vlogs are separate, so you can just go straight to the playlist and have a look at what you want to see. Take care.